हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेलीस्कोप। आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए डायमीटर ऑफ 150 मिलीमीटर एंड द फोकल लेंथ इज 4 मीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है 4 मीटर। The eyepiece has a focal length of 25 millimeter. Calculate the magnifying power of the telescope and the distance between the objective and eyepiece, that is length of the telescope. अब देखो यहाँ magnifying power m for normal adjustment equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece. तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 मीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 25 मिलीमीटर। सो -3 ऊपर जाएगा। सो 4 × 10⁻³ दैट इज 4000 अपॉन 25। सो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू 160। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव and eyepiece. So that is length of the telescope equal to focal length of objective plus focal length of eyepiece. Focal length of objective 4 meter and focal length of eyepiece 25 millimeter. 25 × 10⁻³ meter or 4 plus 0.025. 4 plus 0.025 that is 4.025 meter. ठीक है, नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज। टू थिन लेंस सेट 36 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दैट इज लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप 36 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस and has a magnifying power 8. Magnifying power 8. Calculate the focal length of the lenses. Calculate the focal length of the lenses. ठीक है, अब यहाँ देखो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 8 times the focal length of eyepiece. Since focal length of objective plus focal length of eyepiece equal to 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 times focal length of eyepiece plus focal length of eyepiece equal to 36. So focal length of eyepiece equal to 36/9. That is focal length of eyepiece 4 सेंटीमीटर. And focal length of objective 8 times the focal length of eyepiece, that is 32 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज मैग्नीफाइंग पावर 5. That is focal length of objective upon focal length of eyepiece. Magnifying power 5. The distance between the two lenses is 24 centimeter. Same numerical, that is focal length of objective plus focal length of eyepiece equal to 24. Find the focal length of each. So again, focal length of objective equal to 5 times the focal length of eyepiece. Since focal length of objective plus focal length of eyepiece equal to 24, so focal length of objective 5 times the focal length of eyepiece plus focal length of eyepiece equal to 24 centimeter. So 6 times the focal length of eyepiece equal to 24 centimeter. So focal length of eyepiece equal to 4 centimeter. Now focal length of objective 5 times the focal length of eyepiece.
focal length of objective 5 times the focal length of eyepiece. तो focal length of objective equal to 20 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7. ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 centimeter. Calculate the magnifying power when the final image is formed at infinity. So when final image is formed at infinity, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, दैट इज 40. एंड नंबर 2, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. तो यहाँ पे 200 अपॉन 5, 1 प्लस 5/25. सो 200 अपॉन 5, 5 प्लस 1, 6/5. ठीक है. सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 48 व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डीडीवी. नेक्स्ट है, ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 30 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर. इट इज फोकस ऑन ए स्केल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, दैट इज 200 सेंटीमीटर. फॉर सीइंग विद द रिलैक्स आई, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दैट इज लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप. अभी आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, मतलब फॉर सीइंग विद द रिलैक्स आई, तो रिलैक्स आई के केस में क्या होगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है. तो इसका मतलब क्या कि इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई एट द फोकस ऑफ आईपीस. इमेज लाई एट द फोकस ऑफ आईपीस. ठीक है. तो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, सो इट फॉर्म ए इमेज एट द फोकस ऑफ आईपीस. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप क्या होगा, V0 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ठीक है. सो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन फॉर सीइंग विद द रिलैक्स आई, दैट इज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. ठीक है. तो इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई एट द फोकस ऑफ आईपीस. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे V0, दैट इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. सिंस 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0 इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. So 1 upon V0 minus 1 upon minus 200 equal to 1 upon focal length of objective 30. So 1 upon V0 equal to 1 upon 30. ये माइनस माइनस प्लस राइट साइड में जाने के बाद माइनस 1 upon 200. So which is equal to 200 minus 30 upon 6000. So V0 equal to 6000 upon 170. Nearly 35.3 मीटर. ठीक है, 35.3 सेंटीमीटर. ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव
eyepiece, that is length of a telescope equal to V naught plus FE, that is focal length of objective. So 35.3 plus focal length of eyepiece 3, 38.3 centimeter. So length of the telescope is equal to 38.3 centimeter. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 9. द डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू 3.5 into 10 to the power 3 kilometer. That is 3.5 into 10 to the power 6 meter. And its distance from Earth 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. That is lunar orbital radius. (3.8) into 10 to the power 5 kilometer. That is 3.8 into 10 to the power 8 meter. ठीक है. It is viewed by a telescope which consists of two lenses of focal length 4 meter and 10 centimeter. We know that focal length of objective is large, so which is equal to 4 meter, and focal length of eyepiece is small, 10 centimeter. Calculate the angle subtended at the eye by the final image. That is बीटा पूछा है. ठीक है. अब देखो यहाँ डायमीटर ऑफ मून दिया है आपको, एंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ भी दिया है. तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून अपॉन लूनार ऑर्बिटल रेडियस. So diameter of moon 3.5 into 10 to the power 6 meter. Diameter of moon 3.5 into 10 to the power 6, and lunar orbital radius 3.8 into 10 to the power 8. तो इसको 3.8 नियरली इक्वल टू 4 करेंगे, कैलकुलेशन को दे जाएगा into 10 to the power -2. ठीक है. पॉइंट पॉइंट कैंसल. तो 7/8 into 10 to the power -2 रेडियन अल्फा. अब देखो यार, सिंस मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई tan beta upon tan alpha. Since alpha and beta is very small, so tan beta nearly equal to beta, tan alpha nearly equal to alpha, and therefore angle subtended by image beta equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece into alpha. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 4 मीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 10 सेंटीमीटर इंटू 7/8 into 10 to the power -2. ठीक है. So 3.5 into 10 to the power -2, 7/2, that is 3.5 into 10 to the power -2, और ये -1 ऊपर जाने के बाद +1, so nearly 3.5 into 10 to the power -1 रेडियन. ठीक है. तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून दिया है 3.5 into 10 to the power 3 किलोमीटर, और यहाँ पे रेडियस 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर, दैट इज 10 to the power 8 मीटर. तो इसको सॉल्व करने के बाद आया नियरली 7/8 into 10 to the power -2. नाउ मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. So beta equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece into alpha. Okay.
नेक्स्ट है, ऑन सीइंग विद द अनएडेड आई द विजुअल एंगल ऑफ द मून एट द आई इज 0.6 डिग्री। तो यहां पे अल्फा दिया है 0.6 डिग्री। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर रिस्पेक्टिवली, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव and eyepiece are respectively 200 centimeter and 5 centimeter. What will be the visual angle on seeing through the telescope, that is beta? ठीक है, so again magnifying power m equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece equal to beta upon alpha. So beta equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece into alpha. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 200 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर इंटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0.6, सो 40 इंटू 0.6 दैट इज 24 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 11। A reflecting telescope has a large mirror for its objective with radius of curvature equal to 80 centimeter. Radius of curvature are equal to 80 centimeter. What is the magnifying power of the telescope if the eyepiece has a focal length of 1.6 centimeter? अब देखो यहाँ focal length of objective is half the radius of curvature. For reflecting केस में कॉन्केव मिरर यूज करेंगे, तो वहाँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। सिंस मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 40 सेंटीमीटर अपॉन आईपीस 1.6 सेंटीमीटर, so 400 upon 16. So magnifying power m equal to 25. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो आपके ध्यान में रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव इज ए लार्ज पैराबोलॉइडल मिरर और फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। A terrestrial telescope has objective of focal length 180 centimeter. And eyepiece of focal length 5 centimeter. The erecting lens has a focal length of 3.5 centimeter. What is the separation between the objective and eyepiece, that is length? And what is the magnifying power of the telescope? ठीक है, तो हमने कहा था इन नॉर्मल एडजस्टमेंट that is when image form at infinity, length of a telescope equal to focal length of objective plus 4 times the focal length of erecting lens plus focal length of eyepiece। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 180 सेंटीमीटर प्लस 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस 3.5 सेंटीमीटर प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर, सो 180 So length of a telescope, terrestrial telescope equal to 199 centimeter. Now magnifying power m equal to
focal length of objective upon focal length of eyepiece. So focal length of objective 180 upon eyepiece 5. So magnifying power m equal to 36. ठीक है. Okay, next numerical है. A giant refracting telescope at an observatory has an objective of focal length 15 meter. So focal length of objective 15 meter and eyepiece of focal length 1 centimeter. What is the angular magnification? Okay. Number 2. If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon? Diameter of the image of the moon formed by the objective lens. Diameter of the moon दिया है 3.48 मतलब ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट दिया है 3.8 into 10⁸. तो सबसे पहले एंगुलर मैग्निफिकेशन. m equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece. So focal length of objective 15 centimeter, sorry 15 meter and focal length of eyepiece 1 centimeter. ये हो जाएगा 1500. ठीक है. अब देखो यार, सपोज ये है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ मून. So D suppose क्या है diameter of image. D be the diameter of image formed by objective. ठीक है. अब सबसे पहले निकालेंगे अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव. तो यार देखो अल्फा इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून अपॉन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून. दैट इज लूनर रेडियस. तो डायमीटर ऑफ मून दिया है यहाँ पे 3.48 into 10⁶. और लूनर रेडियस दिया है 3.8 into 10⁸. तो 3.48 upon 3.8 इजीली इक्वल होता है 0.9 और ये प्लस 8 ऊपर जाने के बाद -8 plus 6 -2. ठीक है. तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव. अब जो एंगल ऑब्जेक्ट ने विद द ऑब्जेक्ट सबटेंड किया है वही एंगल रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद द ऑब्जेक्टिव. आया में. तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. सो डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 0.9 into 10⁻². सो डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव into 0.9 into 10⁻². तो 15 into 0.9 into 10⁻². So 13.5 centimeter with the diameter of image of the moon formed by objective. ठीक है. Next है a refracting telescope has an objective of focal length 1 meter. And eyepiece of focal length 20 centimeter.
The final image of sun is 10 centimeter in diameter. Final image of the sun 10 centimeter in diameter is formed at a distance of 24 centimeter. So distance of distinction दिया है 24 centimeter. What is the angle does the sun subtend at the objective? Angle does the sun subtend at the objective? तो देखो यहाँ अगेन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट, सो दिस ऑब्जेक्ट सबटेंड एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो इसने इमेज प्रोड्यूस किया है यहाँ पे H1 और ये विद इन द फोकस ऑफ आईपीस है, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूस किया है फाइनल इमेज H2 एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा विद एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद द ऑब्जेक्टिव, और ये रहेगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू H1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। H1 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दिया है 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे विद इन एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू 1 प्लस 24 अपॉन focal length of eyepiece 20, so which is equal to 20 plus 24, 44 upon 20. H1 equal to 10, sorry, H2 equal to 10, size of image equal to 44 upon 20, so H1 equal to 200 upon 44, so H1 equal to 50 by 11. Since alpha is equal to H1 by 100, so 50 by 11 into 100, so 1 by 22 radian, or nearly equal to 0.045 radian, ठीक है। तो ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।